दोस्तों, कंटिंजेंसी प्लान इज ए बैकअप प्लान for overcome the emergency situations to prevent the customer line stoppages. Contingency plan comes under IATF clause number 6.1.2.3. Now let's understand how to make procedure of contingency plan. दोस्तों, अगर आप डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद कुछ सालों तक जॉब नहीं कर पाते हैं तो आप हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद अपना कैरियर रीस्टार्ट कर सकते हो और अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर शो कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। दोस्तों, आपको कंटिंजेंसी प्लान का प्रोसीजर बनाना सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखें, उसके बाद आप इजीली कंटिंजेंसी प्लान का प्रोसीजर बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेयर टाइटल इज प्रोसीजर फॉर कंटिंजेंसी प्लान। फर्स्ट, पर्पस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंटिंजेंसी प्लान? To establish a procedure for contingency plan and to ensure that contingency plan is developed by considering risk assessment of various manufacturing process and as well customer requirements. सेकेंड नंबर पे है इसका स्कोप, applicable to all emergency situations which can have an interruptions in customer schedule. Number third, responsibility. MDT and top management is the responsibility. Here MDT means multidisciplinary team. Point number 4, here we start making procedure. Here serial number, input activities and input requirement, output and responsibilities. Risk with respect to following aspects are assessed by using MDT: manufacturing process, infrastructure, customer requirements. These risks must focus on production output impacting to the customer. दोस्तों, कंटिंजेंसी प्लान का प्रोसीजर बनाते समय हमको कस्टमर की रिक्वायरमेंट को इम्पैक्ट करने वाले रिस्क पे फोकस करना है। इनपुट में क्या आएगा? पास्ट हिस्ट्री, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, जो आपके पास पुरानी हिस्ट्री है कस्टमर की, उसके आप हेल्प ले सकते हो। आउटपुट का निकलेगा कंटिंजेंसी प्लान, रिस्पॉन्सिबिलिटी MDT। सीरियल नंबर सेकेंड, कंटिंजेंसी प्लान इज डेवलप्ड एट लीस्ट बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स: की इक्विपमेंट फेलियर, इंटरप्शन फ्रॉम एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, reoccurring natural disasters, fire, utility interruptions, labor shortage and infrastructure disruption. So this is the following aspects we have to consider during making contingency plan. Here input past history, customer requirements, output contingency plan and responsibility MDT. Point number 3, in case of emergency situation, the contingency plan is implemented by the responsible person as defined in contingency plan. Input contingency plan and output implementation of contingency plan, responsibility MDT. Now point number 4, input activities. In the event of emergency situation, if the customer schedule are going to disturb, the production department will inform to marketing and in turn marketing will communicate the same to customer on the extent and duration of situation affecting the production. अगर प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करने वाली कोई सिचुएशन अक्कड़ होती है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन्फॉर्म टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, देन मार्केटिंग इन्फॉर्म डायरेक्टली टू द कस्टमर. Input emergency situation in plant, output email communication to the customer. Marketing department can communicate to the customer through email or telephonic. Responsibility production and marketing. Point number 5, where practicable contingency plan
is tested through mock drill to ensure that the contingency plan is effective. If contingency plan is not effective, the same is reviewed and modification is done. Input contingency plan and output contingency mock drill plan / contingency mock drill report revised contingency plan. Responsibility MDT. In point number 5, contingency plan is effectively implemented or effectively working. We have to conduct a mock drill for checking the effectiveness of contingency plan. Point number 6, contingency plan review. Contingency plan is reviewed at least annually by MDT along with top management, and changes are done as required. Changes are formally approved by top management. Input contingency plan, output revised contingency plan, and responsibility MDT and top management. Point number 7, in the event of implementation of contingency plan, all the necessary controls required for the product and process in line with control plan is implemented. If any deviation, the same is documented through minutes of meeting, and the same is communicated to all the concerned personnel including customer. Input contingency plan, output MOM / customer communication, responsibility MDT and marketing. If in case of emergency situation that not meeting the contingency plan, then we can take deviation from the customer in MOM. The MOM should be transparent between customer and supplier. The main objective of Hub of Knowledge Make Training Center providing training, placement and development of career. Friends, if you watching ready-made paid videos, then no use for it, because by watching ready-made paid video doubts are not clear, so don't waste time and money. So please join our live classes ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. अगर आपको स्मार्ट स्किल डेवलप करके करियर में ग्रो करना है तो प्लीज़ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और हमारा ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करें. आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम आवर ट्रेनिंग सेंटर, कैंडिडेट कैन बिल्ड अप हिज स्मार्ट स्किल्स फॉर क्रैकिंग इंटरव्यू एंड कैन गेट ए गुड जॉब in good organization. Here document reference contingency plan CP01 and second procedure for risk assessment P45. These are supported document for making contingency plan procedure. Record references mock drill report F0607. This is the format number of mock drill document. Minutes of meeting F1602 and IATF 16949 clause reference number 6.1.2.3. If you need to grow in your career and need to build up a smart career, you can join our documentation training center Hub of Knowledge Make. If you join our complete advanced training course as shown in template, then job guarantee is 100% after completion of training course. If any guys interested can contact on the number given on screen. Here end of procedure, revision number, date and revision detail of procedures means details of amendment. So friend, this is the procedure for making contingency plan.